Chapter 8 Agreements, Disagreements, and Deadlock 1930 to 1939. From 1930 onwards, the British government was losing patience with the Congress and the Muslim League, as both continued to reject their proposals for a constitutional settlement. They decided to call all the representatives of the parties and princely states to London for consultations for a constitutional proposal. In the three roundtable conferences held in London 1930 to 32, Indian leaders were asked to come to an agreement on a future constitution for India. 1930 से ब्रिटिश गवर्नमेंट के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ, क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग उनका हर कदम पर रिजेक्ट करते थे। उनको वो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट करते थे तो वो रिजेक्ट कर देते थे उसको। इसलिए ब्रिटिश ने यह फैसला किया कि अब वो एक मुश्तरका इजलास करेगी लंदन में। उसमें सब इंडियंस को भी बुलाया था, इंडियंस की जो भी पार्टीज़ थी उनको भी बुलाया था, और लंदन की प्रिंसली स्टेट्स को भी बुलाया था। और उस इजलास को बोलते हैं थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। 3 बार हुआ था, इसलिए थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो लंदन में हुई थी, और वो 1930 से 1932 तक हुई थी। द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस 1930 to 1932. When the first round table conference took place in 1930, the Congress party was absent because Mr. Gandhi and the other Congress members were in jail. The conference successfully agreed that India must be given dominion status and participation of Indians in the government of British India. The conference also recognized that the rights of the minority communities should be safeguarded. For participation in the second conference, Mr. Gandhi and other members of the Congress were released from jail under the Gandhi-Irwin Pact. फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में हुई थी, और कांग्रेस पार्टी एब्सेंट थी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। कांग्रेस इसलिए एब्सेंट थी क्योंकि मिस्टर गांधी को और जो भी दूसरे कांग्रेस मेंबर्स थे वो जेल में थे, और वो जेल में इसलिए थी क्योंकि गांधी ने साल्ट मार्च किया था, और साल्ट मार्च में उसने सिविल डिसोबीडियंस की थी। और ये कॉन्फ्रेंस सक्सेसफुली उसने यही फैसला किया कि सब जो भी माइनॉरिटी पार्टीज़ हैं उनको भी उनको अलग पहचान दी जाए, और उनको एक अलग सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए जाएं। और ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नाकाम हुई क्योंकि उसमें गांधी नहीं था और कांग्रेस पूरी पार्टी ही नहीं थी। और दूसरी जब कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें मिस्टर गांधी और दूसरे मेंबर भी कांग्रेस के आए थे, क्योंकि उनको रिहा किया गया था एक मुआहदे के तहत, और उस मुआहदे का नाम था गांधी-इरविन पैक्ट। In the second round table conference 1931, Mr. Gandhi represented the Congress, Allama Iqbal, the Aga Khan, and Mr. Jinnah represented the Muslim League, Master Tara Singh represented the Sikhs, and Dr. Ambedkar the Dalits, the Untouchables. The issue was the suitability of separate electorates, but Mr. Gandhi's stubborn attitude in rejecting other parties and insisting that only Congress represented all of India led to the failure of the conference in coming to an agreement on constitutional matters. सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में हुई थी। मिस्टर गांधी ने कांग्रेस को रिप्रेजेंट किया था, अल्लामा इकबाल, आगा खान और मिस्टर जिन्ना ने मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट किया था, मास्टर तारा सिंह ने सिक्स को रिप्रेजेंट किया था, और डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित्स द अनटचेबल्स को रिप्रेजेंट किया था। ये दलित्स क्या होती है? दलित्स उस कास्ट सिस्टम को बोलते हैं जो सबसे लो थी। उस ज़माने में हिंदूज़ में एक कास्ट सिस्टम हुआ करती थी, और उसमें दलित्स जो लो कास्ट सबसे लो कास्ट थी उसको दलित्स बोलते थे, और दलित्स को कोई टच भी नहीं करता था, इतनी उसकी अहमियत नहीं थी, फ़ौक़ियत नहीं थी। तो ये एक इशू ये हुआ कि मिस्टर गांधी जो था उसने ये कहा कि वो किसी भी माइनॉरिटी को नहीं मानेगा, सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया को कांग्रेस रिप्रेजेंट करेगी। और ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई इसलिए थी ताकि माइनॉरिटीज़ को और सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए जाएं, लेकिन मिस्टर गांधी ने ज़िद की और उसके इस एटीट्यूड की वजह से ये भी नाकाम हो गई, ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी नाकाम हो गई। The third roundtable conference in 1932 was poorly attended as there were hardly any delegates. Mr. Jinnah and Mr. Gandhi did not attend, and representatives of the Labour Party were not there either. The conference produced no results. The reaction of the British government to the failure of the three roundtable conferences
was that they decided to work with those parties who were willing, and on his return from London, Mr. Gandhi and Congress members were jailed again. थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में हुई थी और वो ऐसे ही नाकाम हो गई थी क्योंकि उसमें कोई भी मेंबर नहीं था। मिस्टर जिन्ना नहीं था, मिस्टर गांधी भी नहीं था और ना ही लेबर पार्टी के मेंबर्स थे, तो ये तो नाकाम हो गई थी। और फिर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का रिएक्शन था, क्योंकि तीनों ही जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस थी वो तीनों नाकाम हो गई थी, तो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि अब जो भी उनके साथ हम उसके साथ काम करेंगे जो भी हमारे साथ काम करना चाहेंगे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का यही रिएक्शन था और मिस्टर गांधी को और कांग्रेस मेंबर्स को वापस जेल में गिरफ्तार किया गया। नाउ आई एम टेलिंग यू द कंक्लूजन ऑफ 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, that what happened in these 3 round table conferences and what was the result of 3 round table conferences. Now or Never by Chaudhry Rahmat Ali, 1933. In January 1933, four students studying at Cambridge University in Britain, led by Chaudhry Rahmat Ali, brought out a pamphlet titled Now or Never. In the pamphlet, he said that a time had come to demand a separate Muslim state called Pakistan. The time was now, or it may never happen. He had come up with a name for this state and gave an explanation of it. Pakistan. Pakistan is both a Persian and an Urdu word. It means the land of the Pak, the spiritually pure and clean. It is composed of the letters of all our homelands, that is Punjab, Afghania, Kashmir, Sindh and Balochistan. Afghania, NWFP, Afghania means Khyber Pakhtunkhwa. When the word is written in Urdu, the I is not used in the Urdu alphabet. नाउ और नेवर एक पैम्फलेट था जो चौधरी रहमत अली ने लिखा था और 4 स्टूडेंट्स जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे उन्होंने पेश किया था। उनको जो है लीड किसने किया था, चौधरी रहमत अली ने किया था। और ये पैम्फलेट 1933 को पेश किया गया था। 1933 जनवरी में पेश किया गया था। इस पैम्फलेट में चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान नाम दिया एक नए मुल्क को जो इसने डिमांड किया था। ही कॉइन्ड द नेम पाकिस्तान फॉर द न्यू country that he demanded in that pamphlet. चौधरी रहमत अली ने बोला that the time was now or it may never happen. उसने बोला कि अगर टाइम है तो अभी, वरना ये कभी भी नहीं हो सकता। और उसने ये एक्सप्लेनेशन अपने पैम्फलेट में दी थी। पाकिस्तान इज़ बोथ अ पर्शियन एंड उर्दू वर्ड। पाकिस्तान जो है ये पर्शियन वर्ड भी है और उर्दू वर्ड भी है। लाइक आस्तान मीन्स द लैंड एंड पाक मीन्स प्योर, पाक मीन्स साफ़, और पाक और साफ़, पाक मीन्स पाक और साफ़। और इसमें जो भी लेटर्स हैं ये सब हमारी होमलैंड्स के हैं। चौधरी रहमत अली ने लिखा था इस पैम्फलेट में। पी से पंजाब, ए से अफ़गानिया, अफ़गानिया उस टाइम खैबर पख्तूनख्वा को बोलते थे। और के फॉर कश्मीर, एस फॉर सिंध एंड बलूचिस्तान के जो आखिरी वाले टी ए एन हैं वो आते हैं तान में। और जब उर्दू में वर्ड लिखा जाता है तो उसमें आई नहीं आता, उर्दू में आई नहीं होता, पाकिस्तान। तो ये सारी एक्सप्लेनेशन चौधरी रहमत अली ने नाउ और नेवर में दी थी। द कम्युनल अवार्ड 1932. राइट आफ्टर द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस वर ओवर, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन रैमसे मैकडोनल्ड announced the communal award in August 1932. This meant that all minority communities in India, Muslims, Sikhs, Anglo-Indians, Christians, Parsis and untouchables would be given separate electorates in a future constitution. However, the award was not popular with the Hindus, who did not accept the untouchables as a separate minority, and Muslims were not happy because it reduced their majority in Punjab and Bengal to a minority. Yet they were ready to accept it. In its annual session held in November 1933, the All India Muslim League passed this resolution. Though the decision falls far short of the Muslim demands, the Muslims have accepted
it in the best interest of the country, reserving to themselves the right to press for the acceptance of all their demands. Later, the communal award led to the making of the Government of India Act of 1935 by the British as the Indians once more had failed to come to an agreement. This act was the last written constitution by the British for their Indian colony and would prove important for the future of independent India. The act became the base for the constitutions of independent India and Pakistan after 1947. कम्युनल अवार्ड 1932 में ब्रिटेन जो प्राइम मिनिस्टर था रैमसे मैकडोनल्ड उसने अनाउंस किया था। इसका मतलब ये है कि जो भी मिनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं इंडिया में थी, मुस्लिम्स, सिख्स हो गई, एंग्लो इंडियंस हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, पारसीज हो गए एंड अनटचेबल्स हो गए, उनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए जाएंगे फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन में। जो भी फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन आएगा उसमें उनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए जाएंगे। क्योंकि हिंदूज़ को ये बात इसलिए हिंदूज़ खुश नहीं थे इससे, क्योंकि अनटचेबल्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिए जाते थे और हिंदूज़ इससे राज़ी नहीं थे। हिंदूज़ ये नहीं मानते थे कि अनटचेबल्स एक सेपरेट मिनॉरिटी है, और मुस्लिम भी इससे राज़ी नहीं थे क्योंकि मुस्लिम्स जो हैं वो पंजाब और बंगाल में वो मेजॉरिटी में थे, और इस कम्युनल अवार्ड के तहत मुस्लिम्स जो हैं वो मिनॉरिटी में थे। लेकिन फिर भी मुस्लिम ने कबूल कर लिया था, राज़ी नहीं थे लेकिन फिर भी कबूल कर लिया था, रिजेक्ट नहीं किया। और फिर कम्युनल अवार्ड के तहत ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 में हुआ था वो इसके तहत ही बना था, और फिर इंडियंस को आज़ादी दी गई थी, सेल्फ रूल दिया गया था। इसमें इंडियंस इसी एक्ट के तहत आगे चलकर इंडिया और पाकिस्तान इंडिपेंडेंट होते हैं, और यही सेम ही कॉन्स्टिट्यूशन आगे चलती है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।